Hello students, in the 6th lecture of molecular basis of inheritance, we studied RNA world and we also studied the experimental proof for the semi-conservative replication of DNA. In today's lecture, we will discuss about the machinery, the enzymes and the actual mechanism of DNA replication. So in the first point, we have to study the different tools or the machineries which are required for the process of DNA replication, and the first prerequisite that is required for DNA replication are the substrates. And what are the substrates for DNA replication? The substrates are the nucleotides. मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर बायोकेमिकल रिएक्शन में बनना हो तो उसके लिए सबस्ट्रेट्स चाहिए. उन सबस्ट्रेट्स के ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट्स. उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स सबस्ट्रेट्स है जिनके ऊपर डीएनए पॉलीमरेजेस एंड सम अदर टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विल फंक्शन एंड they will convert these substrates, that is the nucleotides, into a product that is a double stranded DNA molecule. तो ये जो substrates है, these substrates are 4 types of deoxyribonucleosides triphosphates, जिनको हम shortly deoxyribonucleotides बोलते हैं, मतलब the nucleotides of DNA. And these 4 types of deoxyribonucleotides, which are shortly written as DNTPs, deoxynucleoside triphosphates, they are DATP, DGTP, मतलब deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate, and deoxythymidine triphosphates. But all these deoxynucleoside triphosphates, they are not present in the cytoplasm of the bacteria or in the nucleoplasm of the eukaryotic cells in abundance in that form. They are generally present, the nucleotides of DNA, they are generally present in the form of monophosphates. मतलब they are present in the form of deoxynucleoside monophosphates or DNMPs, which are deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, deoxycytidine monophosphate, and deoxythymidine monophosphate. So for these monophosphates to get converted into triphosphates, ATPs provide the phosphate groups, and the phosphate groups from ATPs are attached on these monophosphates by an enzyme which is called as phosphorylase enzyme. And this conversion of monophosphates into the triphosphates is called as activation of nucleotides, carried out by the enzyme phosphorylase with the help of a ribonucleotide, RNA nucleotide, that is ATP. We will see how this chemical reaction exactly occurs, or biochemical reaction exactly occurs. Suppose this is one of the deoxynucleoside monophosphate. Suppose ये guanosine मोनोफॉस्फेट है, मतलब ये गुआनोसाइन का न्यूक्लियोटाइड है जिसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट है, तो इट विल बी रेफर्ड एज गुआनोसाइन और डीऑक्सीगुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन फॉस्फेट ग्रुप. और इसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना बिकॉज दिस इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट, वन ऑफ द 4 सबस्ट्रेट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये एटीपी है, यहाँ पे जो लिखा है एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है क्योंकि ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, OH ग्रुप है उसके सेकंड कार्बन के पास, एंड यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर ओनली हाइड्रोजन है, देयर इज नो ऑक्सीजन, दैट मींस दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड द न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो अब इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को विच इज प्रेजेंट इन मोनोफॉस्फेट फॉर्म, इसको ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसके पास जो 3 फॉस्फेट्स है, इनमें से ये 2 फॉस्फेट्स, जनरली दिस फॉस्फेट्स आर nomenclatured like this. This is alpha phosphate, this is beta phosphate, and this is the gamma phosphate. So beta and gamma, second and third phosphates of the ATP, they are removed by the enzyme phosphorylase, and these 2 phosphate groups, they are attached on the first, that is alpha phosphate of the DGMP in this case. So that is why now DGMP is converted into DGTP. अब इसके पास एक नहीं 3 फॉस्फेट्स है क्योंकि इसके 2 फॉस्फेट्स इसके पास आ गए, और ये एक्चुअल
डीएनए सिंथेसिस के लिए जो वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चाहिए डीऑक्सीग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया एंड जो एटीपी था दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू ईएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से एटीपी को यूज करके फॉस्फोराइलेज एंजाइम again what it will do, it will convert the DAMP into DATP, it will convert DCMP into DCTP and it will also convert DTMP deoxythymidine monophosphate into deoxythymidine triphosphate, which are the actual substrates for DNA synthesis or DNA replication. Okay, now we have discussed the substrates and the activation of these substrates, मतलब activation of nucleotides for the process of DNA replication. But we also have to discuss about the energetics of replication, because replication also requires energy and this energy is also provided by these substrates themselves. ये substrate energy कैसे provide करते हैं for the process of replication that we will see in the next slide. Okay students, so now we have to study energetics of DNA replication. For example, we are studying the formation or synthesis of a new DNA strand or a daughter DNA strand. और इस daughter DNA strand के अंदर suppose अब तक दो nucleotides add हो गए हैं. This is the first nucleotide at the 5' end and this is the second nucleotide at the 5' end. And the first two nucleotides are added or linked with each other with the help of a phosphodiester bond which is formed between them by DNA polymerase. And suppose now this third nucleotide is to be added, इस third nucleotide को अब second nucleotide के साथ add करना है, तो this addition will also be carried out by DNA polymerase by forming a phosphodiester bond between second nucleotide and the third nucleotide. So phosphodiester bond forms between the 3' hydroxyl group of the first and the 5' phosphate group of the second nucleotide. Likewise, the next phosphodiester bond also forms between the 3' hydroxyl of the second nucleotide and the 5' phosphate of the third nucleotide. Phosphodiester bonds always form in this way. Any phosphodiester bond always forms between the 3' hydroxyl group and the 5' phosphate of the next nucleotide. And that is why DNA replication always occurs in 5' to 3' direction. It can never occur in 3' to 5' direction. But what we can observe here from this point of view, from this perspective, is that any nucleotide which is present in the DNA is having only one phosphate group. मतलब the substrates for the DNA synthesis are trinucleotides, as we studied in the previous slide. But actually inside the DNA, the trinucleotides are not present. The monophosphates or the nucleotides are present in the form of monophosphate form, mononucleotide form. तो जो दो phosphates ऐड किए गए थे ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स वो फिर से रिमूव किए जाते हैं, लेकिन उनको ऐड करना एंड फिर से रिमूव करना ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. क्योंकि इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना उस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ी. अब इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड फॉर्मेशन में भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो इस तरीके से जितना लंबा डीएनए होगा, जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होंगे, उतने ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स लगेंगे एंड इसलिए उसको उतने ज्यादा एनर्जी लगेगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, फॉर द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. तो एग्जैक्टली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो वैसे भी हमने पहले डिस्कस किया था कि हाउ टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर and how the phosphodiester bond actually forms by a condensation or dehydration reaction. तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म तो अभी हमको यहाँ पे नहीं देखना है, लेकिन हाउ ओनली a monophosphate out of the triphosphate is used and incorporated into the new nucleotide polynucleotide strand of DNA, वो हमको देखना है. और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है वो कैसे रिलीज होती है एंड
कैसे, कहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कैसे यूटिलाइज होती है वो हमको यहाँ पे देखना है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस थर्ड न्यूक्लियोटाइड इज बीइंग एडेड विद द सेकंड न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. तो क्या होता है कि सेकंड न्यूक्लियोटाइड का 3' हाइड्रोक्सिल एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड का 5' फॉस्फेट, जो पहला फॉस्फेट है अल्फा फॉस्फेट, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज अनदर सेकंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. यहाँ पे ऑलरेडी एक है, यहाँ पे एक और बनेगा और इस सिंगल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये दो न्यूक्लियोटाइड सेकंड एंड थर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ गए. तो अब ये चेन इस तरीके से ऐसे लंबा होता जाएगा. लेकिन इन दिस प्रोसेस ये दो फॉस्फेट ग्रुप्स जो है विच आर बीटा एंड गामा फॉस्फेट्स, they are removed from the triphosphate और ये दो फॉस्फेट्स रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट. अगर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट. अब इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी है. वी नो दैट किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर वो डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट है तो उसके, अगर वो ट्राइफॉस्फेट है तो सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट के अंदर या बॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. दिस बॉन्ड इज एक्चुअली एन फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड, और ये भी एक फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड है. तो इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी यहां से ब्रेक हो गया, फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड. And whenever a phosphoanhydride bond is broken from the nucleotide, large amount of energy is released because this is high energy bond, this is also a high energy bond. तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, प्लस इन दोनों फॉस्फेट के बीच में इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट्स के बीच में भी ये जो और एक फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड है ये भी ब्रेक किया जाता है by another enzyme which is called as pyrophosphatase enzyme. So pyrophosphatase breaks this bond and breaking of this bond also releases a large amount of energy. इस bond के break होने की वजह से ये दो phosphates एक दूसरे से separate हो गए. Now these are two inorganic phosphates separated completely from each other and the bond breakage between them results in the release of energy which is greater than 7.3 किलो कैलोरी. हमको पता है कि कोई भी फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो मोर देन 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है. सो दो फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होने से जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ही एनर्जी की जरूरत नहीं होती है डीएनए रेप्लिकेशन में. डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एनर्जी in other aspects, for example in separation of the two template strands from each other also. तो वहाँ पे हेलिकेज एंजाइम जो काम करता है उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो हेलिकेज के पास भी एक एटीपी हाइड्रोलाइजिंग, इस तरीके से एटीपी हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी होती है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज यूज्ड बाय द हेलिकेज. लेकिन एटलीस्ट वी शुड नो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन comes in this way. Okay, so this is the general energetics of DNA replication. We will talk about further points about DNA replication in the next slide. So now we will study origin of replication and a replicon. So what is an origin of replication? The replication does not start anywhere randomly within the DNA. It starts always at specific sites or a single specific site in the DNA, depending on the type of the DNA. In bacteria, it starts only from a single site, and in eukaryotes, it starts from several specific sites. But that specific site from where the DNA replication always starts is called as origin of replication. Okay, and the E. coli DNA, which is small and is having 4.6 into 10 raised to 6 base pairs, has only one such origin of replication, and this origin of replication is called as ori. And
the replication starts from this origin of replication bi-directionally, मतलब इस डायरेक्शन में भी replication start होता है and इस डायरेक्शन में भी replication start होता है, and the two replication forks they meet at a common point where there is termination of the process of replication, and that common point where the two replication forks meet and the replication is finished is called as terminated. So because there is only one origin of replication in E. coli, the replication is in E. coli is quite simple, and the region which is replicated from a single origin of replication is referred as a replicon. Okay, so we have written the definition for you here. A replicon is a unit of replication, or it is the amount of DNA replicated from a single origin of replication. So in case of E. coli, because there is only one origin of replication which is responsible for the replication of the complete chromosome of E. coli, there is only one chromosome, so उस complete chromosome का replication होने के लिए एक ही origin of replication responsible है. That is why this complete area, मतलब complete chromosome is a single replicon in E. coli. So in E. coli there is only one origin of replication and there is only one replicon that you have to remember. But in case of a linear long eukaryotic chromosome, the DNA is very long and it contains several origins of replication. For understanding, we have written only one origin of replication here, only one origin of replication and only one replicon here. But the length of DNA in this direction and in this direction is pretty much. So there are several origins of replication in the further DNA, and there are several origins of replication behind this replicon also. So if we see this much part of the DNA, there is one origin of replication. So replication never starts from here or from here. It always starts from the origin of replication. And again, in eukaryotes also, once the replication starts, it proceeds bidirectionally. Replication इस direction में भी होता है from origin and इस direction में भी होता है from origin. And when the replication continues and reaches at this point, which is called as the terminator, then the replication stops. In eukaryotic cells, because there are several origins of replicon on the eukaryotic DNA, there are several such replicons or units of replication. Okay, so this is about origin of replication and the replicon. We will talk about further points of replication in the next slide. Okay students, so now we will discuss about the different types of enzymes which are involved in DNA replication. There are several enzymes which are involved in DNA replication, like Dna Polymerases, Dna ligases, then topoisomerases, Dna helicases, etc. First we will discuss about the most important enzyme of DNA replication, that is Dna polymerase. And in all the cellular DNA replication, the enzyme that is mostly used is DNA dependent DNA polymerase. अब इस एंजाइम का नाम ऐसा क्यों है? इसको DNA polymerase इसलिए बोलना है क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पोलीमराइजेशन कर रहा है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन करके DNA बना रहा है, इसलिए इसका नाम DNA polymerase है, because it is polymerizing DNA molecule. And इस polymerization process में जो template है जहाँ से information ली जा रही है for the synthesis of new strand, वो template भी DNA ही है. तो template DNA है, इसलिए ये DNA polymerase DNA के ऊपर dependent है. So the DNA polymerization activity is dependent on DNA itself. That is why the polymerase is called as DNA dependent DNA polymerase. अगर RNA टेम्पलेट होता और RNA से इंफॉर्मेशन कॉपी करके DNA बनाया जाता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. तो ऐसा भी होता है कुछ वायरसेस के केस में.
कि वहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, उस डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए बोलते हैं। तो इस केस में डीएनए ही बनाया जा रहा है, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री या सी डीएनए क्यों न हो आरएनए से, बट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ही एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, डीएनए ही बन रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम उस केस में भी डीएनए पॉलीमरेज रहेगा। लेकिन दैट डीएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट विल बी कॉल्ड एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट आरएनए है। तो आरएनए टेम्पलेट है, उससे डीएनए बनाया जा रहा है बाय एन एंजाइम, तो एंजाइम इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एंड अगर डीएनए टेम्पलेट है इन मोस्ट ऑफ द सेलुलर रेप्लिकेशन वैसा ही होता है, और उससे डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करके इंफॉर्मेशन को कॉपी करके डीएनए बना रहे, तो सच टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस आर कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। नाउ these DNA dependent DNA polymerases carry out the actual process of replication or DNA synthesis by the formation of phosphodiester bonds between the adjacent nucleotides that we already know now. Now these DNA polymerases, they must be very fast in their activity, क्योंकि बहुत बड़े जीनोम को, क्रोमोसोम्स को बहुत कम टाइम में रेप्लिकेट करना पड़ता है या डुप्लीकेट करना पड़ता है, मतलब उसकी कॉपीज बनाने पड़ते हैं, एक डीएनए से 2 कॉपीज बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ई कोलाई, द साइज ऑफ द जीनोम, द साइज ऑफ द टोटल डीएनए इज 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, और इतने बड़े डीएनए को डिवाइड करना होता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेल डिवीजन। और ई कोलाई अगर फेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस है तो सिर्फ 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, लेकिन 20 मिनट्स में इतने बड़े डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट डीएनए रेप्लिकेशन होना पड़ेगा। और एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होने के बावजूद भी ई कोलाई में 38 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से टर्मिनेटर तक डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होने तक 38 मिनट्स लगते हैं। आपके एनसीईआरटी की किताब में गलती से इसको सिर्फ 18 मिनट्स लिखा है। वो 18 मिनट्स किस हिसाब से लिखा होगा दैट आई विल टेल यू, लेकिन एक्चुअली फ्रॉम एडिशन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू द एडिशन ऑफ द लास्ट न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ ई कोलाई टोटल 38 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 18 मिनट्स आर नॉट सफिशिएंट। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि सेल 20 मिनट्स में डिवाइड हो रहा है और 38 मिनट तो सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन को लगते हैं, लेकिन बिफोर द सेल डिवाइड्स द डीएनए शुड हैव बीन ऑलरेडी रेप्लिकेटेड। तो इसका रीजन ये है कि ई कोलाई में मल्टीपल रेप्लिकेशन फोर्क्स होते हैं। मतलब अभी सेल सपोज डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, उसकी 20 मिनट्स का लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया, तो अगले जनरेशन में जो सेल डिवीजन होना है उसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन इसी सेल डिवीजन फेज में स्टार्ट होता है। और इस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होना है वो तो कंटिन्यू हो ही रहा है, लेकिन उसका भी आधा रेप्लिकेशन 20 मिनट्स का पहले सेल डिवीजन साइकिल में ही हुआ था। तो इस सेल डिवीजन साइकिल में फॉर एग्जांपल एक करंट सेल डिवीजन साइकिल है जिसको हम A1 बोलेंगे। इस A1 साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है फॉर द करंट सेल डिवीजन आल्सो एंड फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन आल्सो। तो नेक्स्ट सेल डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे 20 मिनट का सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और जो नेक्स्ट सेल डिवीजन है दैट इज A2, इस सेल डिवीजन में और 18 मिनट का सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो ऑलरेडी इस सेल डिवीजन के लिए जो डीएनए रेप्लिकेशन होना है वो पिछले सेल डिवीजन प्रोसेस में ही 20 मिनट्स का हो गया, और करंट सेल डिवीजन प्रोसेस में अभी A2 में फॉर एग्जांपल 18 मिनट का और डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो 20 + 18 इस तरीके से कुल 38 मिनट्स में कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और यहाँ पे 18 मिनट का डीएनए रेप्लिकेशन तो इस फेज के लिए हो रहा है, लेकिन जो अगला फेज है फॉर एग्जांपल A3 थर्ड सेल जनरेशन, इस स्टेज में जो सेल डिवाइड होना है 20 मिनट्स में, उसके लिए 20 मिनट्स का रेप्लिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो गया और 18 मिनट्स का रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा। तो 20 + 18 तो आगे के सेल डिवीजन के लिए 38 मिनट का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऑनगोइंग सेल साइकिल में या सेल डिवीजन प्रोसेस में ऑनगोइंग सेल डिवीजन के लिए 18 मिनट्स का रेप्लिकेशन होता है, एंड नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए 20 मिनट्स का डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट होके रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रेप्लिकेशन फोर्क्स इन ई कोलाई।
ओके, सो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल रेप्लिकेशन रिक्वायर्स हाउ मेनी मिनट्स, तो 18 मिनट्स, बट करंट सेल डिवीजन के लिए जितना डीएनए रेप्लिकेट होता है करंट सेल साइकिल फेज में वो सिर्फ 18 मिनट्स का होगा, और ऑलरेडी 20 मिनट्स का पिछले सेल साइकिल में हो गया होगा. So this is about E. coli DNA replication and the DNA polymerases. There are actually 3 different types of DNA polymerases in E. coli. We will talk about them in the next slide. Now DNA polymerases have to be very fast in their activity for this reason. But in addition to being fast, they must also not make any mistakes during the process of DNA replication. मतलब जहाँ पे एडेनिन के सामने थाइमीन इनकॉर्पोरेट करना है, वहाँ पे वो गलती से थाइमीन के जगह पे ग्वानाइन, साइटोसिन या एडेनिन नहीं ऐड कर सकते हैं. अगर उन्होंने ऐसा किया तो डीएनए में म्यूटेशंस आ जाएंगे एंड mutations will affect the phenotypes of the organism. They may cause different types of genetic disorders in multicellular organisms, and they may cause some other phenotypic effects in the unicellular or multicellular organisms also. So ये mutations नहीं हो, इसलिए DNA replication का process बहुत ज़्यादा accurate होना चाहिए, and that accuracy of DNA polymerases is called as fidelity in DNA replication. So DNA polymerases are very fast and they are very accurate in their activity. We will discuss about DNA polymerases further in the next slide. Okay students, now we will discuss about different types of DNA polymerases in prokaryotes, that is in E. coli, and in eukaryotes. E. coli possesses different types of DNA polymerases. There are at least 5 different types of DNA polymerases are present in E. coli, and the main replicating enzyme DNA polymerase which is present in E. coli is DNA polymerase 3. मतलब DNA polymerase 3 carries out the synthesis of leading strand. It also carries out the synthesis of lagging strand also in E. coli. So most of the DNA replication is carried out by DNA polymerase 3, which is a DNA dependent DNA polymerase of E. coli. DNA polymerase 1 also helps a little bit in the process of DNA replication. It is involved in the removal of the RNA primers from the Okazaki fragments and in the addition of the deoxyribonucleotides after removal of the primers. So primer remove करके उन primers के जगह पे DNTPs ऐड करने का काम, गैप्स फिल करने का काम DNA polymerase 1 करता है at the end of DNA replication, but most of the DNA replication is carried out by polymerase 3. And DNA polymerase 2 and other types of DNA polymerases, they are mostly involved in DNA repair. मतलब DNA में कहीं पे mutations होते हैं तो उन mutated regions में से गलत न्यूक्लियोटाइड्स को, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स को निकाल के वहाँ पे करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स इनकॉर्पोरेट करने का जो काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रिपेयर. तो उस रिपेयर प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड अदर टू टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस आर इन्वॉल्व्ड. In case of eukaryotes, there are over 15 different types of DNA polymerases. लेकिन आपको कहीं पे स्टेट बोर्ड में या एनसीईआरटी में 5 या कुछ रेफरेंस बुक्स में 12 के 5 polymerases सिर्फ बोले हैं, which is not correct. Actually, there are, according to the current research, there are more than 15 different types of DNA polymerases present in eukaryotic cells. But out of these over 15 different types of DNA polymerases, only 3 DNA polymerases are involved in the replication of nuclear DNA. न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसकी रेप्लिकेशन के लिए ओनली 3 डीएनए पॉलीमरेजेस आर यूज्ड. एंड दिस डीएनए पॉलीमरेज आर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज, क्योंकि इसके पास दोनों एक्टिविटीज वाले प्रोटीन्स होते हैं. वन पार्ट और वन सब यूनिट और सम सब यूनिट्स आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, and other subunits of the enzyme, they are involved in the extension of the primer. The primer is made up of RNA, but the primer is extended by addition of deoxyribonucleotides, that is by the synthesis of DNA. So initial synthesis of primer and its extension by synthesis of initial amount of DNA
is carried out by DNA polymerase alpha. And then the main replicating activity, that is synthesis of leading and lagging strands, they are carried out by these two important DNA polymerases, that is DNA polymerase delta and DNA polymerase epsilon. And most of other DNA polymerases are involved in repair process in eukaryotic cells also. There is one DNA polymerase called as DNA polymerase gamma, for example, gamma DNA polymerase. It is involved in the replication of mitochondrial DNA. Replication of mitochondrial DNA. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. The enzyme or the DNA polymerase which is involved in the mitochondrial DNA replication is DNA polymerase gamma. Okay, we will stop here. We will discuss about the actual mechanism of DNA replication in the next slide.